Okay, so coming back to infertility, when like a couple gets married, how soon, should they, like, I know there's immense pressure on women, like right from the start, first month, second month, say, okay, why aren't you pregnant, why aren't you pregnant? When should the couple start worrying? Okay, so I do feel कि इसका जवाब actually बहुत सारे factors पे depend करता है. If somebody is getting married young, I feel they should enjoy the time together, bond together before they embark onto this journey of family. अगर किसी they do not know to have any complication, waiting for up to 1 year should be absolutely fine. और ये वो room है जो शायद society को, parents को, दोनों side के parents को provide करना चाहिए. On the other hand, if you are already known to have a problem, for example polycystic ovaries, endometriosis, या semen की कोई problem, या फर्ज कीजिए कि शादी होते ही आपको अंदाजा हो गया the male is having some problem in sexual performance, then it means there can be a problem, then seek for help early, then don't wait for that year. और दूसरी बात इसी तरह I would say not to wait for a year if your age is over 35 and so your wait, try to see in 6 months time if you conceive. If you don't, then go and seek help appropriately. On the other hand, saying that, एक और बात भी ज़हन में रखने की ज़रूरत है. एक young couple, 22 साल की लड़की, 24 साल का लड़का, 2 months में the mother-in-law or the mother starts getting worried कि oh my god she is not pregnant, and then start giving ovulation induction tablets क्योंकि फलां के डॉक्टर ने फलां को दी थी, let's try this. We are interfering with nature very early on, और उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा निकलता है कि जो प्रोसेस शायद अगले 6 महीने में खुद से नेचुरली हो जाना था, हमने उसको with our interference, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, डिले कर दिया. नेक्स्ट स्टेप आता है जब वो 6 महीने प्रेग्नेंट नहीं होती, उसके बाद फ्रॉम लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास कोई कहता है फलां दाई जो है ना वो बहुत अच्छी है, बहुत काबिल है, तो उसके पास ले जाते हैं. दोज दाइज इंसर्ट समथिंग इनटू द वजाइना, यूजुअली देयर इज अ black colored cotton soaked with in something which I do not even know what the base of that is, but that is going to cause infection, that is going to cause tubal blockade. अब वही लड़की जो actually healthy थी, now after 6 months when she would come to a reproductive medicine specialist, she already has got a tubal blockade which should not have been there. हमने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया बाय आर हेस्ट, बाय आर, हमारी जल्दबाजी ने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया. यही हम उसको 6 महीने लाइफ को अंडरस्टैंड करने का मौका देते तो शायद वो इस प्रॉब्लम में ना फंसती.